Good morning to all my dear students. With the starting of new month, we are going to start a new chapter, that is chapter number 10, Basic Geometrical Ideas. Okay, so the first topic which we are going to see in this chapter is point. Now, what is this? What is this? You will say, ma'am, it's a dot. ये एक dot है. Yes, it's a dot. It is also known as a point. इसको हम और क्या बोलते हैं? Point. Now, point has no width, breadth or depth. Point की लंबाई नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती और depth means कोई गहराई भी नहीं होती. Point is denoted by a single capital letter of English alphabet. A से लेके Z तक जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, पॉइंट को आप उनमें से कोई भी एक अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हो, बट रिमेंबर अल्फ़ाबेट मस्ट बी कैपिटल. सपोज आई एम राइटिंग हियर P, मैं यहाँ पे P लिख रही हूँ. सो द नेम ऑफ दिस पॉइंट नाउ बिकम्स पॉइंट P. अब हम इसको क्या बोलेंगे? दिस इज पॉइंट P. दिस इज अनदर पॉइंट. अगर मैं इसको नेम दे दूँ A, सो दिस इज पॉइंट A. So clear what is point and how we name a point. So let's move to our next topic, that is collinear and non-collinear points. Now what do you mean by collinear points? When points lie on a same line, that is known as collinear points. जब points एक line में होते हैं, that are called collinear points. You can see in the figure point A, B, C and point D. ये चारों पॉइंट्स एक लाइन में हैं, दैट्स वाई दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स. नेक्स्ट इज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. अपोजिट टू कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन. पॉइंट्स जो एक लाइन में नहीं होते, दैट आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. इन द नेक्स्ट फिगर वी कैन सी पॉइंट ए, बी, सी एंड डी. ये चारों पॉइंट एक लाइन में नहीं है. Yes, that's why they are called non-collinear points. So I hope collinear points and non-collinear points and point is clear to you. So let's move to our next topic. Okay students, so now our next topic is line. Now what is this? अगर मैं ये एक draw कर दूँ symbol, then what is this? ये क्या होता है? What is this? You will say, ma'am, it's a line. Yes, correct. This is called line. Now line, it is a set of points. Line is a set of points. Line, it can be extended in both directions. Line को हम दोनों तरफ से extend means बड़ा करना, तो हम line को दोनों तरफ से बड़ा कर सकते हैं. Suppose I have made this line, मैंने ये line बनाई है. अगर मुझे चाहिए तो मैं इस line को और बड़ा कर सकती हूँ, चाहे इस साइड से. अगर मुझे चाहिए मैं line को इस साइड से भी बड़ा कर सकती हूँ. मैं चाहूँ दोनों साइड से लाइन को बड़ा कर सकती हूँ. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ. ओके, अब ये लाइन थी, अब लाइन को मैंने बड़ा कर दिया. अगर मुझे चाहिए मैं इसी लाइन को छोटा भी कर सकती हूँ. तो इसकी जो लेंथ थी वो अब छोटी हो गई. यस, अब इसकी लेंथ इतनी है. अब मैं चाहूँ तो इसको इधर से बड़ा कर दूँ, तो क्या होगा? इसकी लेंथ बढ़ गई. यस, सो अ लाइन हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ. लाइन की लेंथ कभी भी फिक्स्ड नहीं होती. वी कैन इंक्रीज लेंथ बट वी कैन नॉट इंक्रीज विथ. हम लाइन की लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं बट वी कैन नॉट इंक्रीज द विथ. हम चौड़ाई इंक्रीज नहीं कर सकते लाइन की. सो दिस वॉज ऑल अबाउट लाइन. नाउ हाउ वी कैन नेम अ लाइन. लाइन को हम नेम कैसे करते हैं? सो देयर आर टू मेथड्स. फर्स्ट मेथड इज बाय अ सिंगल स्मॉल लेटर. कि एक लाइन हो, उसके अगर हम एक कोई भी सिंगल लेटर लिख दें इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, तो वो लाइन का नेम हो जाता है. जैसे कि दिस इज लाइन L, इसको क्या बोलेंगे? लाइन L. दिस इज लाइन L. दिस इज फर्स्ट मेथड. सेकेंड मेथड इज ड्रॉ 2 points ऑन अ लाइन, नेम दैट पॉइंट्स एंड देन
we can give the name to the line. Like this is line C and D. लाइन पे मैंने 2 पॉइंट बनाए, अब ये क्या हो गई, लाइन C D. दिस इज द वे वी नेम अ लाइन. या तो हम लाइन को ऐसे नेम कर सकते हैं या हम लाइन को ऐसे नेम कर सकते हैं. Okay, so I hope line, what is line is clear to you. So we can move ahead. That is types of line. Now there are types, various types of lines. First is intersecting lines. When two lines meet each other at a same point, that is known as intersecting line. जैसे कि in the figure we can see line AB and line CD intersect or meet each other at a point. That point is named as O. लाइन AB और CD दोनों दो लाइंस हैं जो एक कॉमन पॉइंट पे मिल रही हैं, तो ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस. ओके, एंड द पॉइंट वेयर दे आर मीटिंग, जहाँ पे वो मिल रही हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम इंटरसेक्शन पॉइंट और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, सो दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइंस. नेक्स्ट इज concurrent lines. When 3 or more lines intersect each other or meet each other at a common point, then those lines are known as concurrent lines. See, in the figure we can see 1, 2, 3 and 4. 4 line है यहाँ पे. Okay, so all the 4 lines are meeting at a common point. चारों line एक common point पे मिल रही हैं. So line AB, CD, E, F, G, H, all the 4 lines are known as concurrent lines, and the point where they are meeting, that point is known as point of concurrence. Clear? So we can say P is the point of concurrence. This was the second type. Now third type. Third type is parallel lines. Parallel lines are those lines which do not intersect each other. पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल, आप कभी ट्रेन में गए हो तो आपने ट्रेन की विंडो देखी है. ट्रेन की विंडो में ऐसे ऐसे करके लाइंस होती हैं, ऐसे ऐसे ऐसी विंडो होती है ट्रेन की. यस, उसमें लाइंस होती हैं. ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं? नहीं, ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती. दैट्स वाई दीज टाइप्स ऑफ लाइन आर नोन एज पैरेलल लाइंस. See here in the figure, line AB and line CD are 2 lines. यहाँ पे 2 लाइन हैं. अब 2 लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं एक दूसरे को. So these is parallel lines. We can extend this line. हम इस लाइन को बड़ा कर सकते हैं. See, but then also these lines will not intersect. And the length of starting and ending, स्टार्टिंग और एंडिंग की जो लेंथ है विल ऑलवेज रिमेन सेम. वो हमेशा सेम रहेगी चाहे हम उसको कितना भी एक्सटेंड कर दें. तो दीज लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स. एंड सिंबल फॉर पैरेलल लाइन्स इज दिस. दिस इज द सिंबल फॉर पैरेलल लाइन्स. सो इन दिस केस वी कैन से दैट AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. Next is perpendicular lines. Now when lines meet each other and form an angle of 90 degree, जब lines आपस में मिलती हैं और 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं, जैसे you can see in the figure, line AD and line RQ meet each other. ये दोनों एक सिंगल कॉमन पॉइंट पे मिल रही हैं, दैट इज पॉइंट S. और ये क्या फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री एंगल. किसी भी साइड से देख लें देन इट इज 90 डिग्री एंगल. ये हर साइड से 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है. तो जब भी लाइंस कॉमन पॉइंट पे मिलकर 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती हैं, दोज लाइंस आर नोन एज परपेंडिकुलर लाइंस. एंड नाउ सिंबल फॉर परपेंडिकुलर लाइंस इज दिस. दिस इज द सिंबल फॉर परपेंडिकुलर लाइंस. AS is perpendicular to RQ. So I hope what is line, what are the types, 4 types of line is clear to you. So we can move ahead. So students, our next topic is line segment. Now what is line segment? Line segment is a part of line. Line segment line का एक part है. It has 2 end points. Line segment has 2 end points. You can see in this figure
one end point is here and one end point is here. Yes, so we can say that line segment has two end points. It has a definite length but no breadth and thickness. उसकी जो लेंथ होती है लाइन सेगमेंट की वो डिफिनाइट होती है, मीन्स उसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते. अगर मैं चाहूँ तो मैं इधर नहीं बढ़ा सकती, ना ही मैं उसकी लेंथ को इधर बढ़ा सकती हूँ. तो लेंथ इज फिक्स्ड बट नो ब्रेथ और थिकनेस, बट उसमें ब्रेथ नहीं होती और उसमें थिकनेस भी नहीं होती लाइन सेगमेंट में. ओके, सो दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. नाउ हाउ वी नेम अ लाइन सेगमेंट. हम लाइन सेगमेंट को नेम कैसे करते हैं? सपोज दिस इज अ लाइन सेगमेंट, दिस इज लाइन सेगमेंट एक्स एंड वाई, सो वी कैन राइट लाइक दिस. line segment XY, or we can say line segment YX. Both are correct. So understood what is line segment? Yes. So let's move to another topic, that is ray. Now ray is another part of line. Ray भी line का एक part है. Now in ray it is fixed from one side but we can extend it from other side. ray जो होती है वो एक side से fix होती है. Means you can see here, जहाँ पे पॉइंट एंड पॉइंट होगा वहां से लाइन एक्सटेंड नहीं हो सकती. सो वी कैन सी वन एंड पॉइंट इन रे. यस, यहाँ पे एक एंड पॉइंट दिख रहा है हमें, दिस इज एंड पॉइंट. सो रे हैज वन एंड पॉइंट, तो मतलब इधर से रे फिक्स्ड है बट इट कैन बी इंक्रीज फ्रॉम दिस साइड. इस साइड से मैं उसको जितना चाहे उतना बढ़ा सकती हूँ, मेरी मर्जी. ओके, सो रे हैज वन एंड पॉइंट, रे इज फिक्स्ड फ्रॉम वन साइड बट वी कैन इंक्रीज इट फ्रॉम अदर साइड. जितना भी हमें चाहिए हम उतना उसको इंक्रीज कर सकते हैं. नाउ हाउ रे इज डिनोटेड. रे को हम लिखते कैसे हैं? लाइक दिस वी राइट रे, वी डिनोट रे लाइक रे ए बी. ओके, सो दिस वॉज अबाउट रे. नेक्स्ट इज प्लेन. प्लेन वो उड़ने वाला प्लेन नहीं, दिस इज अनदर प्लेन. ओके, सो प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस. क्या होता है? फ्लैट सरफेस जो होता है उसे हम बोलते हैं प्लेन. लाइक आपने बॉल देखी है, बॉल क्या होती है? गोल शेप की होती है. यस, तो उसमें फ्लैट सरफेस, सीधा सरफेस तो नहीं होता ना बॉल में. सो बॉल इज नॉट अ प्लेन. बट इफ आई टॉक अबाउट दिस बोर्ड, ये बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधा है. यस, सो दिस इज अ प्लेन. ये प्लेन है. आपके घर में जो टेबल होगी, आप वो टेबल देखना, वो भी एकदम स्ट्रेट होगी, है ना. सो दैट इज नोन एज प्लेन. कोई भी फ्लैट सरफेस होता है उस सरफेस को हम बोलते हैं प्लेन. नाउ हाउ इज प्लेन डिनोटेड. प्लेन को हम डिनोट कैसे करते हैं? सो यू कैन सी सम पॉइंट्स इन प्लेन. यस, ये एक फिगर है प्लेन का, इसमें आप कुछ पॉइंट्स देख सकते हो. तो वी डिनोट प्लेन विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स. So we will say plane APZ. What? Plane APZ. Now, a plane has infinite width and length. Means plane की हम width और length जितना चाहे उतना increase कर सकते हैं. That's up to us. But thickness, जो उसकी thickness होती है उसको हम increase नहीं कर सकते. हम उसकी width और length increase कर सकते हैं. plane की width और length इंक्रीज कर सकते हैं बट उसकी जो थिकनेस है उसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते. ओके, एंड अ प्लेन हैज़ नो बाउंड्रीज. प्लेन की कोई भी बाउंड्रीज नहीं हो सकती. दैट्स वाई वी कैन एक्सटेंड इट. जितना हमें चाहिए उतना हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. ओके, सो दिस वॉज अबाउट प्लेन. सो आई होप लाइन सेगमेंट, रे एंड प्लेन इज क्लियर टू यू. सो वी कैन मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज measuring line segments. How we measure line segments. line segments को कैसे measure किया जाता है, that we will understand through a video. So let's start our video. Measuring lengths of line segments. Look at the screen. We have a line segment AB. Now here we are going to measure the length of this line segment. So we first take a ruler as shown. Now look at the marking on the scale 1, 2, 3, 4 and so on. Now these markings are in centimeter. Now look at the marking between 0 and 1.
you can see that this 1 centimeter is divided into 10 equal parts. So, each part represents by 1 by 10th centimeter, and this is nothing but 0.1 centimeter or 1 millimeter. Now we measure the length of the given line segment with the help of this ruler. Now we place the ruler along with the line segment AB, and we do it such that the 0 mark of the ruler is on the first end of the line segment. That is, it is at A. Now look at the point B and read the mark of this point Y on the ruler. It is 3 millimeter after the 8 centimeter. This means that the length of the line segment AB is 8 centimeter and 3 millimeter or 8.3 centimeter. So students, I hope that you have enjoyed the video and you have understood as well कि आपने समझा भी होगा कि क्या है और आपको अच्छे समझ में आ गया होगा that what is measuring line segments. So let's start with our new topic. So students, our next topic is comparison of line segments. So we will see when two or more line segments are given to us, then how to compare them. उनको compare कैसे करते हैं? So there are 3 methods of comparison. Comparison करने के लिए हमारे पास 3 methods हैं. First method is comparison by observation. Now comparison by observation का मतलब देखकर compare करना. लाइन सेगमेंट्स को देखकर बताना कि कौन सी लाइन सेगमेंट छोटी है और कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है. ऑब्जर्वेशन मीन्स देखकर बताना. ओके, सो लेट अस सी कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन. नाउ 2 लाइन सेगमेंट्स आर गिवन टू अस, दैट इज लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट सी डी. सो नाउ यू कैन सी एंड टेल विच इज ग्रेटर लाइन सेगमेंट. अब आप देख के मुझे बता सकते हो कि इन दोनों लाइन सेगमेंट में से कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है. यस, वी कैन से दैट लाइन सेगमेंट सी डी इज ग्रेटर देन लाइन सेगमेंट ए बी. जो सी डी लाइन सेगमेंट है वो ए बी लाइन सेगमेंट से बड़ी है. ओके, बट इन सम केसेस और से फॉर एग्जाम्पल Now I have taken another line segment, that is line segment X and Y. अब मैंने दूसरी line segment ली. Now you can say which line segment is greater. Line segment AB is greater और line segment XY is greater. क्या आप मुझे बता सकते हैं दोनों में कौन सी बड़ी है? No, we cannot tell by seeing. मतलब हम observe करके नहीं बता सकते कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है. So what we will do? We will move to next step. हम next step पे जाएंगे. That is comparison by divider. हम divider से compare करके देखेंगे कि दोनों में से कौन सी line segment बड़ी है. Okay, so comparison by divider we will see with the help of a video. We will learn with the help of a video. And comparison by tracing means tracing करके हम कैसे line segment को compare करते हैं. That also we will see with the help of a video. So let's start our video and understand these 2 topics. Comparing lengths of line segments. Look at the screen. We have 2 line segments AB and CD. Now from these 2 line segments, can you tell me which one is the bigger line segment? Just by looking at these 2 line segments, we cannot say that which one is bigger. So what do we do now? In order to compare the lengths of line segments, we will make use of divider. Look at the screen. This is a divider. It has 2 pointed ends and 2 arms. Now look at this adjustment screw. With the help of this screw, we can adjust the arms of the divider. Now we first measure the line segment AB by keeping the 2 ends of the divider on the points A and B as shown.
Now lift the divider and put its one end on the one point, say point C of the other line segment as shown. What do we observe? We observe that the opening of the divider is more than the length of the line segment CD. So, from this we can say that the length of the line segment AB is more than the length of the line segment CD, or AB is greater than CD. So, in this way we can compare the lengths of any line segments. Comparison by tracing. Look at the two line segments MN and KL. Which one of the two line segments is longer? It is not clear from observation which one is longer. Therefore, trace KL on a tracing paper. Place it on MN. It is clear that KL is smaller than MN. Hence, MN is the longer line segment. So students, I hope that you have understood the video very well. You have understood the concept of comparison by divider and comparison by tracing. ये दोनों आपने अच्छे से वीडियो में समझ लिए होंगे. Yes. So in this video, what topics we have covered? We have seen the topics like point, collinear and non-collinear points, line segment, ray, plane, and measuring line segment, and the last comparison of line segment. These all topics we have covered in this video. Further topics we will see in the next video. Okay, so thank you.